Welcome to our channel Doctor of Optometry. So today we will discuss about the MCQs of Anatomy and Physiology of Eyeball part 3rd. Now question number 51. So the lamina cribrosa is present in lamina cribrosa जो है ये किस पार्ट में पाया जाता है? ऑप्शन ए है कोराइड, सीलरी बॉडी, सेक्लेरा and option D is the retina. So lamina cribrosa is present in sclera, that is C part. So question number 52 is dorsal palate is situated in eyebrow, eyelids, lacrimal apparatus, and D option is conjunctiva. So dorsal palate is situated in eyelids, that is B part. So question number 53 is suspensory ligamentous extends between lens and option A is iris, option B is ciliary body, option C is choroid, option D is limbus. So suspensory ligamentous extends between lens and ciliary body. Option B is the correct answer. Now question number 54. Which of the following is not a true basement membrane? Option A is Descemet's membrane, option B is Bruch's membrane, option C is Lenz capsule, and option D is Bowman's membrane. So which of the following is not a true basement membrane? The correct option is option D, that is Bowman's membrane. Question number 55. Which structure divides the lacrimal gland into two lobes? Option A is orbicularis oculi, option B is tarsus, option C is ventral gland, option D is levator aponeurosis. So the correct option is option D. Question number 56. The approximate volume of the orbit is? Option A is 60 ml, option B is 10 ml, option C is 30 ml, and option D is 45 ml. So the approximate volume of the orbit is 30 ml. Option C is correct answer. Question number 57. The intraorbital length of the optic nerve is? Option A is 1 mm, option B is 5 mm, option C is 10 mm, option D is 30 mm. So the length of intraorbital part of the optic nerve is D part, that is 30 mm. यूजुअली अगर हम देखेंगे 4 पार्ट्स होते हैं ऑप्टिक नर्व के. जो हमें फर्स्ट पार्ट है वो है इंट्राऑक्यूलर पार्ट. इंट्राऑक्यूलर पार्ट जो है इट इज़ 1 mm, और दूसरा पार्ट जो हमें इसका होता है दैट इज़ इंट्राऑर्बिटल पार्ट. इंट्राऑर्बिटल पार्ट 30 mm होता है, और तीसरा पार्ट जो इसका होता है ऑप्टिक नर्व का दैट इज़ इंट्रा कैनालिक्यूलर विच इज़ 6 to 9 mm, एंड द लास्ट वन फोर्थ इज इंट्राक्रेनियल पार्ट जो कि हमें 10 mm होता है. सो 4 पार्ट्स होते हैं ऑप्टिक नर्व के. नाउ क्वेश्चन नंबर 58. द न्यूरॉन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर इन द विजुअल पाथवे लाइज इन विच लेयर ऑफ द रेटिना? सो जो हमें फर्स्ट ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन होता है विजुअल पाथवेज में, तो वो किस लेयर में होता है? ए ऑप्शन है इनर प्लेक्सिफॉर्म लेयर, ऑप्शन बी इज आउटर प्लेक्सिफॉर्म लेयर, ऑप्शन सी इज ऑप्टिक नर्व, एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव. तो अगर हम देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन जो है इन तीनों में से वो नहीं होता है. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव. First order of neuron is present in inner nuclear layer, that is the bipolar cells constitute the first order of neuron. जो inner nuclear layer होता है उसमें हमें present होता है first order of neuron. Now question number 59 is
The nature of tear is, A option is acidic, option B is alkaline, option C is neutral, option D is none. So the nature of tear is alkaline, option B is correct. Question number 60. Inner nuclear zone of lens is embryonic, fetal, infantile और adult. तो इनमें से हमें बोलना है कि इनर न्यूक्लियर जोन ऑफ लेंस कौन सा होता है. द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, दैट इज एम्ब्रियोनिक. देयर आर 4 न्यूक्लियर जोन्स ऑफ द लेंस. इनरमोस्ट इज एम्ब्रियोनिक. जो इनरमोस्ट होता है वो एम्ब्रियोनिक होता है. उसके बाद जो इनरमोस्ट है वो एम्ब्रियोनिक है. उसके बाद जो लेंस का दूसरा न्यूक्लियर पार्ट होता है दैट इज़ फीटल. और थर्ड वन जो है इसके बाद तीसरा पार्ट जो होता है दैट इज़ इन्फेंटाइल. एंड आउटर पार्ट जो होता है लेंस का जो न्यूक्लियर पार्ट है इट इज़ अडल्ट. सो देयर आर 4 न्यूक्लियर जोन्स ऑफ लेंस. इनरमोस्ट इज द एम्ब्रियोनिक, उसके बाद फीटल होता है एंड उसके बाद इन्फेंटाइल होता है एंड द आउटर इज अडल्ट. Now question number 61. Approximately volume of vitreous in ml. Option A 2.5, option B 4.4, option C 6.5 and option D 30. So the correct option is 4.4, option B. Question number 62 is the main portion of aqueous humor is formed by option A active transfer, option B ultrafiltration, option C diffusion एंड ऑप्शन डी नन. सो जो मेन पोर्शन होता है एक्वस ह्यूमर का वो एक्टिव ट्रांसफर से बन जाता है. ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर. एक्वस ह्यूमर इज़ फॉर्मड बाय एक्टिव ट्रांसफर सेक्रिएशन. 70% इससे बनता है. सो द मेन पोर्शन ऑफ एक्वस ह्यूमर इज़ फॉर्मड बाय दिस प्रोसेस दैट इज़ एक्टिव ट्रांसफर सेक्रिएशन. एंड सेकंड वन इज़ दैट इज़ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एक प्रोसेस है जिससे 20% बनता है. एंड थर्ड वन इज़ द डिफ्यूजन. डिफ्यूजन भी और एक प्रोसेस है जिससे 10% ऑफ एक्वस ह्यूमर बनता है. क्वेश्चन नंबर 63 इज लेंस कैप्सूल इज थिकेस्ट एट. लेंस कैप्सूल जो है वो थिकेस्ट कहाँ पे होता है? पोस्टीरियर पोल, option B is anterior pole, option C is equator region and option D is para-equatorial region. Lens capsule is thickest at para-equatorial region. और thinnest जो होता है कैप्सूल, लेंस कैप्सूल इज थिनेस्ट एट पोस्टीरियर पोल. तो पोस्टीरियर पोल पे ये थिनेस्ट होता है और थिकेस्ट होता है पेरा इक्वेटोरियल रीजन पे. Now question number 64 is thickest wall of the orbit is option A is medial, option B is lateral, option C is inferior and option D is superior. The thickest wall of the orbit is lateral. Option B is correct one and thinnest wall of orbit is medial. Question number 65. Which tear layer contains immunoglobulin A? Option A is mucin layer, option B is lipid layer, option C is aqueous layer and option D is glycoprotein layer. The correct option is option C, that is aqueous layer. IgA is secreted into the lumen of the main and accessory lacrimal glands which form the aqueous layer. It plays a role in host defense mechanism. Question number 66 is which of the following contributes to the aqueous layer of the tear film? Option A is glands of Wolfram, option B is glands of Zeiss, option C is goblet cells and option D is Meibomian gland. So the correct option is option A, that is glands of Wolfram. Question number 67. Which bone is not a part of medial orbital wall? Option A is maxilla, option B is sphenoid, option C is zygomatic and option D is ethmoid.
So correct option is option C, that is zygomatic bone is not a part of medial orbital wall. The medial orbital wall is formed from the following four bones. The first one is frontal process of maxilla, second is the lacrimal bone, third is the orbital palate of the ethmoid, and fourth is the lesser wing of sphenoid. So question number 68. Which structure does not pass through the superior orbital fissure? Option A is ophthalmic artery, option B is frontal nerve, option C is cranial nerve third, option D is cranial nerve fourth. The correct option is option A, that is ophthalmic artery. Question number 69. The type of cell found in the retina are: option A is Purkinje cells, option B is Schwann cells, option C is neuroglial cells, opशन D is एमाक्राइन सेल्स। तो इनमें से हमें बोलना है कौन से ऐसे सेल्स हैं जो रेटिना में पाए जाते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, दैट इज एमाक्राइन सेल्स। Question number 70. The eye lens is: option A is concave, option B is convex, option C is biconcave, option D is biconvex. जो लेंस होता है वो बेसिकली बाइकन्वेक्स होता है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। Question number 71. The persistence of vision for the human eye is: option A 1/6th of a second, option B is 1/10th of a second, option C is 1/16th of a second, and option D is 1/18th of a second. The correct option is option C, 1/16th of a second. Question number 71. Now question number 72. Sorry, यहाँ पे so it is the question number 72. This part of the eye dilates and contracts based on the environment. Option A is sclera, option B is cornea, option C is lens, option D is pupil. So the correct option is D part, that is pupil. जब भी हम देखेंगे क्या आई बॉल में कंट्रैक्शन होती है और डायलेशन होती है, तो हमें यहाँ पे चेंजेस जो आते हैं वो बेसिकली पिपल में आते हैं। फर्स्ट अगर ये कंट्रैक्ट होता है तो ऐसे, और उसके बाद अगर डायलेट होता है तो डायलेशन पे हमें दिखता है और कंट्रैक्शन पे भी हमें दिखता है। चेंज जिस स्ट्रक्चर पे आती है इट इज़ द पिपल। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन। नाउ क्वेश्चन नंबर 73 इज: the transparent lens in the human eye is held in its place by: option A is smooth muscles attached to the iris, option B is ligaments attached to the ciliary body, option C is ligaments attached to the iris, and option D is smooth muscles attached to the ciliary body. So the correct option is option B, that is ligaments attached to the ciliary body. So these are the ciliary processes. तो यहाँ से हमें ऐसे लिगमेंट्स निकलते हैं जो इस लेंस पार्ट्स कैप्सूल से अटैच होते हैं और उसके बाद यहाँ पे हमें लेंस दिखने को मिलता है। तो इन लिगमेंट्स को हम बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड सस्पेंसरी लिगमेंट्स। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 74. सीलरी प्रोसेस और टोटली हाउ मनी इन नंबर्स? जो सीलरी प्रोसेस हैं, बेसिकली सीलरी प्रोसेस क्या है? सीलरी प्रोसेस से हमें सेक्रिएशन होती है एक्वस ह्यूमर की, तो वो कितने होते हैं? दीज आर बेसिकली फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो सीलरी बॉडी में पाए जाते हैं, तो इनको हम सीलरी प्रोसेसेस बोलते हैं। दीज आर कॉल्ड द सीलरी प्रोसेसेस। जो हमने यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अभी देखी, तो ये सीलरी प्रोसेस होती है। तो ये सीलरी प्रोसेसेस कितने होते हैं? 20 to 30, 30 to 40, 40 to 60 और 70 to 80।
So the option D is correct one, that is 70 to 80 ciliary process or present. Now question number 75. Volume of tear film is 5 micron liter, 7 micron liter, 9 micron liter or 11 micron liter. So the option B is correct one, that is 7 micron liter. Thank you. Like, share and subscribe.